So good morning. Good. And welcome to your day 3 of the magic practice. So what we were just talking about is that all these riddles which are there get revealed to us only when universe want it to be revealed to us. When universe feels that we are ready for it, only then it uncovers, get unraveled in front of us. अदरवाइज तो ये बुक हमने कितनी बार पढ़ ली होगी अपने आप भी, ऐसे भी ग्रुप में भी पढ़ ली होगी, but we just miss it out because maybe we are not ready for it, and when we are receptive and open to it, that is the time when it starts pouring in. And उस टाइम पे अगर आप उसको कैच कर लेते हो, उस टाइम पे अगर आप उसको रिसीव कर लेते हो, then it stays, isn't it? Yes. Yeah. Puran ji, would you like to add something? Puran, are you there? I think he said he will take little time in settling down. Okay, let's start today's chapter. It's a very important chapter. And why is it important? Any guesses? Why is it important? Because it's about a relationship with people in our life. Yes. And why are relationship important? नहीं, अगर अकेले रहेंगे तो उससे बड़ी पनिशमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती. आइसोलेशन इज द बिगेस्ट पनिशमेंट. वी नीड पीपल इन आवर. और ये हम सब ने ड्यूरिंग लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया. यस. है ना? सबने पहले ना पुराने टाइम में ना, अंग्रेजों के टाइम में ना, काला पानी की सजा होती थी. अब वो काला पानी क्या होता था कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ना एक छोटा सा आइलैंड है, तो वहां पे ना प्रिजनर्स को अकेला छोड़ देते थे आइसोलेशन में. तो हम अकेले ही रहते थे, पूरी दुनिया से दूर, सबसे कटे हुए. कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई लोग नहीं आसपास, कुछ नहीं. तो उसको काला पानी की सजा बोलते थे. That was considered to be the biggest punishment. Yes. Yeah. And रिलेशनशिप ना हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. आप खुद ही देख लो, घर में ही देख लो. अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपका अपनी वाइफ के साथ थोड़ी सी भी अनबन हो गई चलते टाइम, या सुबह सुबह उठते ही कुछ ऐसी बात हो गई है, एंड यू आर गोइंग टू वर्क, योर होल डे इज रूइंड. आप रास्ते में ट्रैफिक पे भी गुस्सा करेंगे, आप ऑफिस जाके अपने कलीग्स पे भी चिल्लाएंगे, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे. होता है ना ऐसा हमारे सबके साथ? यस. यस. या अगर हमें किसी ने ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, मान लो बॉस ने किसी बात पे बोल दिया या किसी कुलीग ने कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया, तो हमें अच्छा नहीं लगा, है ना? एंड दैट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग अस. सो वी कॉल देम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. बट रिलेशनशिप तो फिर भी है ना? यस. या तो हर रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये रिलेशनशिप हमारा यही नहीं कि सिर्फ हमारा घर पे है, ऑफिस में है, फ्रेंड्स के साथ है. नहीं, हर जगह है. Like we are on this platform right now, we are also in relationship, right? ये भी हमारे रिश्ते हैं ना? Yes. Yeah. And you just step out of the house and you maybe you take a Ola or Uber and you're traveling to point A to point B, wherever you're going. वहां पर भी relationship है. It's a relationship of a passenger and a driver. पर है. तो रिलेशंस तो हर जगह हैं. और अगर हमारा हर रिश्ता इतना अच्छा हो, इतना बढ़िया हो कि वो हमें हर जगह सिर्फ खुशी ही दे, it gives us joy, it gives us that sense of belonging, the sense of contentment, that blissfulness. अगर वो हर रिश्ते में हो जाए तो लाइफ कैसे होगी? Just
जस्ट इमेजिन, ये जितने भी महापुरुष हुए मैं कहूंगी, या जितने भी एनलाइटेंड सोल्स होते हैं, उनके लिए उनका हर रिश्ता उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उनके लिए ये नहीं होता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। For them, each and every person coming in touch with them is building a relationship. And every human being is important. Every relationship is important. ऐसे अगर हम जीने लग जाएं, तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। सारे झगड़े, सारे wars, everything will just, cease to exist. सब खत्म हो जाएगा। पर ऐसा बनाने के लिए शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी ना। Yes. Yeah. So charity begins at home. है ना? तो कल का सेशन में हमने एक रिमाइंडर पढ़ा था that we had to look for 3 people in our life who are important to us, जो हमारी जिंदगी में important है, और उनके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है। ये नहीं कि अच्छा नहीं है, मतलब कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हो, तो हर रिश्ता होता है, पर अदरवाइज अच्छा चल रहा है। पर हम चाहते हैं कि वो और बढ़िया हो जाए। जो कभी कभार भी थोड़ी बहुत क्या कहते हैं उसको, नोक झोंक हो जाती है, वो भी कम हो जाए या ना हो, है ना। हमेशा स्मूथ चलता रहे, हमेशा एक दूसरे से मतलब बहुत प्यार रहे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता, हर रिश्ता ऐसे हो जाए कि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात को समझें। सो लेट्स बिगिन विद दोज 3 पीपल। आई होप आप सबने वो 3 लोग अपनी जिंदगी के ढूंढ लिए हैं और उनकी फोटोग्राफ्स आइडेंटिफाई कर ली हैं। और ये पिक्चर्स, और ये जो पिक्चर्स है ना, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट यस्टरडे, ये पिक्चर्स या तो उनकी इंडिविजुअल पिक्चर होनी चाहिए या फिर आपके साथ होनी चाहिए, कोई ग्रुप फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना, आपने फैमिली के 3 मेंबर्स ले लिए और देयर इज अ ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ अ फैमिली एंड यू से कि हाँ इसमें सारे ही हैं। नो, दैट विल नॉट हेल्प। So the picture has to be either independently उनकी हो, इंडिविजुअल पिक्चर हो, या हो सकता है वो आपके साथ हो, राइट। तो आपको ऐसी पिक्चर्स ढूंढनी है। तो अगर नहीं, आप कल आपने ऐसी पिक्चर नहीं ढूंढी और आपने कोई ग्रुप पिक्चर ढूंढ ली है, then you still have time, you can look for it, right? So let's read today's chapter. So who's reading today? I will read. Okay, let's read the day 3. Day 3, magical relationships. Yes. हाँ जी। Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. Okay. अब ये सोचो, अगर आप कहीं जा रहे हो, like for example, I'm going out for lunch today, yeah, and if I'm just going out for lunch on my own and there's no one there, would I like to dress up? Would I choose the best dress which I'm going to wear because I'm going to meet my friends? No. क्या फर्क पड़ता है, किसी ने देखना नहीं है, किसने देखना है? So if you're at home alone, you are in your pajamas, right? You don't bother to dress up. आपको अगर कोई बोलता भी है ना कि उठ जा यार, तैयार हो जा, I'm talking to you and you're looking as if you're just still in your pajamas, and हमारा जवाब क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है? होता है ना ये जवाब हमारा, yes or no? Yes. हम यही बोलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है? I just want to be comfortable. Yes. कोई देख थोड़ी रहा है मुझे इस टाइम। बट जब किसी ने हमें मिलना होता है या हमें कोई देख रहा होता है, we dress up. We dress up because people matter.
अगर आसपास में कोई हो ही ना तो कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। जो लोग अकेले रहते हैं या जो 1 या 2 लोग घर पे होते हैं, कई बार खाना ही नहीं बनता घर में, नहीं बनता है। किसके लिए बनाना है? If somebody is staying alone, many a times they don't even cook. भूख लगी, घर में जो भी पड़ा खा लिया। कौन बनाए? किसके लिए बनाना है? All these small things matter, क्योंकि हमें लोग हमारे आसपास चाहिए। Because human being is a social animal. वो अकेला रह ही नहीं सकता है। As very rightly Varun was saying कि पहले जमाने में जब किसी को सबसे कड़ी सजा देनी होती थी तो उसको काली पानी की सजा देते थे कि उसको उस आइलैंड पे भेजो जहां पे कोई भी ना हो, लेट हिम स्टे अलोन। इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं है। एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब हमें लोग नहीं मिलते थे, जब हम लोगों से नहीं मिल पाते थे, कितना ज्यादा इम्पैक्ट था। मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ उस चीज का। People were feeling anxious, people were feeling lost, people were feeling lonely. Why? Because we need people, we need relationships. कुछ भी हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई देखे, कोई नई डिश बनाते हैं तो भी, अब देखो आज के जमाने में देखो आप, एनीबडी इज मेकिंग एनीथिंग न्यू, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डालता है फॉर पीपल टू नो कि दिस इज द न्यू डिश आई मेड, दिस इज द न्यू ड्रेस आई एम वेयरिंग, or this is the place I'm visiting. Why? Because we want people to know, we want people to be connected to us. So anything and everything is meaningful for us when we have people to share it with. Yeah, please continue. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Okay, abhi aap, there are people in their families, there is always some, kuch khatar patar chalti rehti hai, and they feel so frustrated. कहते हैं मन ही नहीं करता घर आने का, बट क्या करें, कहीं तो जाना है ना ऑफिस के बाद, वो घर आना है, रेस्ट करना है, बिकॉज बॉडी नीड्स दैट अनवाइंडिंग, दैट रेस्ट, और वो मिलता नहीं है। Because when they come home, there is some argument between 1 or 2 people in the house, and the whole environment gets impacted. If that is the kind of impact it is having on your life, if that is the kind of life आप जी रहे हो, या आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका वो डिसहार्मनी है कहीं ना कहीं, तो इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। और हर जगह अगर हमारे रिश्ते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं फॉर अस टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बिकॉज हर जगह अगर हमारे रिश्ते ही हैं तो हर रिश्ते में ग्रैटिट्यूड अगर हम डाल देंगे, प्रैक्टिस कर देंगे, तो लाइफ तो हर जगह ही चेंज होती चली जाएगी ना। सो सबसे इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल चैनल्स हैं ये हमारे लिए। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट द रिलेशनशिप्स आर हैविंग राइट नाउ? अभी हमारी जिंदगी देखो, आप अगर घर की बात करें तो घर में रिश्तों में कैसा माहौल है, आपका रिश्तों में आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, और उसका क्या असर हो रहा है लाइफ पे। आप अगर आप बाहर स्टेप आउट करते हो, आपका नेबरहुड, आपकी कम्युनिटी जहां आप रहते हो, वहां पे आपका रिश्ता कैसा है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आप। क्या आपके रिश्ते अपने नेबर्स के साथ अच्छे हैं, या आप जब बाहर निकलते हो यू स्माइल एट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर, or you just bang the door? I've seen people doing that. When the neighbors are, walking across, or सीढ़ियां चढ़ रहे हैं कुछ, they just bang the door. They don't even want to see their faces. ऐसा है। और the moment you are just, walking past their house, and they open the door, say, hello जी, how are you? कैसा चल रहा है? बड़े दिन हो गए देखा नहीं आपको, सब ठीक ठाक है? You can see the difference. It brings smile on your face. It lightens your day.
when there is somebody who's talking to you like that. And when somebody bangs the door on your face, it impacts you too. And then उसके बाद आप चिल्लाते हो, गुस्सा करते रहते हो, बोलते रहते हो, चिढ़ते रहते हो उनके बारे में, कुछ ना कुछ बोलते जाते हो. किस तरह के लोग हैं? मतलब क्या है? ऐसे होते हैं क्या नेबर्स? लोग तो कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ जरूरत पड़े तो सबसे पहले नेबर्स काम आते हैं. ऐसे नेबर्स काम आएंगे? ऐसे लोग होते हैं. And then we start off and we don't even realize just banging a door by your neighbor has impacted your life so much. कुछ दिखाई दे रहा है अपनी जिंदगी में? कहीं कहीं कुछ हुआ ऐसा जो इम्पैक्ट कर गया आपको? ये तो अक्सर होता है. या तो हम लोगों को अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, या या जिसको हमने इग्नोर किया होता है वो हमें इग्नोर कर रहा होता है. हाँ. तो देरी सब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे. हाँ. कि जैसे बहुत कुछ हमें बोलना हो, हमने बोला ना हो, या बहुत कुछ उन्होंने बोलना हो, उन्होंने बोला ना हो. हाँ. और वो तो क्यों नहीं बोला? बिकॉज वो स्पेस ही क्रिएट नहीं हुआ है. राइट. वो कनेक्शन ही नहीं बना है. राइट. और वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को? So we feel lonely, we feel upset, and we don't have that joy, that fun, that creativity, that positive environment around us जिसमें हम खुश रह सकें, हाँ. हम मस्त रहें. वो ना लविंग इन्वायरमेंट होता ही नहीं. रिग्रेट्स, कंप्लेंट्स चल रहे होते हैं उसमें. हाँ. और वो पूरे दिन हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते रहते हैं. अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया तो क्या उसका इम्पैक्ट उसी टाइम टेम्पररी होता है? नहीं, वो तो बढ़ता चला जाता है. Yeah. So can you see how much it is impacting our lives? And Right. we don't even pay attention to it. So आज Right. हमारे पास मौका है कि हम उन रिश्तों को जो ऑलरेडी अच्छे हैं उनको थोड़ा और अच्छा करें, ताकि हमें समझ आ जाए कि अपने रिश्तों को कैसे हम सुधार सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं. और फिर गोइंग फॉरवर्ड we can apply them in the relationships which are not really working well. शुरुआत हम करेंगे जहां अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा करने के लिए, just to learn, just to practice के करना कैसे है. And then we can go and apply it on any or every relationship, right? हाँ जी, पढ़े. Science is now confirming the wisdom of the One great second, one sages. second, one second, one second. I just want you to read from here to receive the life of your dreams again, please. Okay. Yeah. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affects your life now and how they are the most powerful channels of gratitude to start magically changing your life. Yeah, so they are a very powerful channel. चैनल समझते हैं? जरिया. ये रिलेशनशिप्स हमारे बहुत पावरफुल जरिया है. एक व्हाट डू आई से, सोर्स कह सकती हूँ मैं. एक सोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन दीज एरियाज. या. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But ओके, पॉज पॉज. अब जितने भी आप देखोगे ना, ऑल दीज पीपल, जैसे मैं कही थी, जो महापुरुष होते हैं, जो एनलाइटेंड होते हैं, या जो मतलब विजडम वाले लोग होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, या जो उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से समझा होता है, वो उनकी लाइफ अगर देखो तो इवन साइंस इज प्रोक्लेमिंग दैट कि ऐसे लोग जो होते हैं, वो लोग, उनके लिए सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना. उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा फ्रेंड है, ये उससे क्यों बात कर रहा है. वो पोजेसिवनेस भी नहीं होती है उनमें, है ना. तो उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं एंड दे फील कनेक्टेड. अच्छे क्यों होते हैं रिलेशनशिप? बिकॉज दे फील कनेक्टेड.
उनमें हर एक में अपना, उनको अपने ही बंदा नजर आता है, अपना ही पन नजर आता है। उनको ये नहीं लगता कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है, मेरा भाई है, ये उसका भाई है। वो अपना पराया नहीं होता है उनमें। उनके लिए हर एक इंसान इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए हर एक रिश्ता उतना ही प्यारा होता है ना। तो इस बुक में ना रोंडा ने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेके चली है वो, एंड शी इज गिविंग यू बोथ द वर्ल्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से काम करता है, इफ यू सी फ्रॉम द साइंटिफिक वे ऑफ इट और फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। तो दोनों तरीके से उसने इसको समझाने की कोशिश की है, सो दैट वी गेट इट इन अ प्रॉपर वे, कि इसको प्रैक्टिस करना क्यों, राइट? हाँ जी, पढ़े। But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. ओके, ये जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में बताई है, दैट इज दैट एवरी टाइम वी आर कंप्लेनिंग अबाउट समबडी, हमारे रिश्ते में कोई भी है, अभी भी आपने जो 3 रिश्ते लिए ना, जस्ट थिंक अबाउट दोस 3। कभी कभी हम उनके बारे में कंप्लेन कर देते हैं, या हम उनसे किसी ना किसी बात पे झगड़ पड़ते हैं, और झगड़े का कारण क्या होता है? कंप्लेन या ब्लेम होता है, किसी चीज के लिए हम उनको ब्लेम कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं, जब भी हम किसी रिश्ते में कंप्लेन करते हैं या ब्लेम करते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? दैट रिलेशनशिप स्टार्ट्स डिटीरिएटिंग। आपने एक बार बोला, उन्होंने 2 बार बोला, होता है ना। जब आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, आप एक बात सुनाते हैं, सामने वाला 2 बात सुना देता है। इन्हीं 3 रिश्तों में देखो फिलहाल, हाँ, डोंट गो एनीवेयर राइट नाउ, जस्ट लुक एट दीज 3 रिलेशनशिप्स व्हिच यू हैव चोजन। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कुछ बोला या उन्होंने कुछ बोला, किसी ने भी शुरुआत की, डजंट मैटर, बट थिंग्स स्टार्ट्स हीटेड अप, गुस्सा आ जाता है और हीट अप हो जाता है, एग्रीमेंट इसमें आर्ग्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? आप मुंह फुला के उधर बैठे हैं, वो मुंह फुला के उधर बैठी है, या बैठा है, जो भी है, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, उसकी हर बात पे चिल्ला रहे हो आप, वो कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी गुस्सा आ जा रहा है। ऐसा होता है ना? व्हाई? बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन, और हमें उस टाइम सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही होती है उस इंसान में। वो कुछ अच्छा भी कर रहा होगा तो हमें उसमें नेगेटिव ही दिखेगा, क्या? तो ऐसे जब हम ऐसा करते हैं, तो क्या होता है? रिश्ता नीचे की तरफ चला जाता है ना। इट्स अ ड्विंडलिंग स्पाइरल, वो नीचे की तरफ घूमता चला जाता है, एक एक करके बस नीचे नीचे चला जा रहा है। जितनी कंप्लेन, जितने आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, जितना आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही वो नीचे जा रहा है। ये चीज याद रखना, जब जितना आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आपका रिश्ता नीचे जा रहा है, उतना ही नीचे जा रहा है रिश्ता। अब उसको ऊपर लाना है कि नहीं लाना है? नहीं लाना है तो वो नीचे ही जाता जाएगा। यू बोथ विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इट, उसको नीचे 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 ले जाने के लिए। बट अगर वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो उसको सुधारना, तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू थिंक अबाउट 10 गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। आपको उस चीज को, उस रिश्ते को वापस उस लेवल पे लाने के लिए जहां उस वक्त था, जब आपका उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, उस लेवल तक लाने के लिए यू विल हैव टू काउंट 10 ब्लेसिंग्स, यू विल हैव टू थिंक अबाउट 10 गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। ऐसा क्या है उसके बारे में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो? ऐसा क्या किया था उसने आपके लिए? हो सकता है कभी जब आपको, आपकी तबीयत खराब हो, तो उसने आपको डॉक्टर के पास लेके गया हो सकता है जब आपको चाय पीनी हो, उसने बोला चल बैठ तू, मैं बना देती हूँ, या मैं बना देता हूँ चाय। दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो आपको अच्छा लगा था। सो बेसिकली जो आपको अच्छा लगा था, जो आपको उस टाइम पे खुशी दे गया था,
आपने ऐसी चीजों के बारे में उनके बारे में सोचना है टू ब्रिंग इट बैक टू दैट लेवल। पर हमें तो ये पता ही नहीं है ना, हम तो जब उसको नीचे की तरफ धकेलते जाते हैं तो बस वो गिरता ही चला जाता है रिश्ता, और हमें पता भी नहीं चलता ये क्यों हो रहा है। बस यही कहते हैं यार देखो कल तक कितना अच्छा था ये बंदा, और इसके साथ जो देखने वाले भी वो भी कहते हैं देखो इनमें कितना प्यार था दोनों में, मतलब एक वो कहते हैं ना वो क्या कहते थे उसको, दांत काटी रोटी का रिश्ता, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ करके एक हिंदी की का प्रवर्ब हुआ करता था। मतलब इतना ज्यादा प्यार था कि एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। एंड लुक एट इट टुडे, अपने रिश्तों में देखो, क्या ऐसा कोई रिश्ता है जिस जहां ऐसा था कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते थे, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे, और आज एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं या बात करते हुए कतराते हैं। मेरे साथ है ऐसा एक रिश्ता राइट नाउ, इट इज जस्ट राइट नाउ ऑन माई फेस। जब मैं ये बोल रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे सामने वो मेरा रिश्ता नजर आ रहा है मुझे। थिंक अबाउट इट, क्या उसको और नीचे गिरने देना है क्या हमें, या वापस उसको उस लेवल पे लाने की कोशिश करनी है जहां वो था। या सो लेट्स रीड फॉरवर्ड। Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. Okay, pause. So when I'm talking about this relationship which just popped up in front of me, so it says, let's read from here. You will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. So in that relationship, if you start thinking and paying gratitude, suddenly you will start receiving messages. You will start receiving call from that person, and that will give you happiness. किसी के साथ हुआ है ये? Any one of you? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। Okay. So मेरे साथ हुआ है, जो मैं जिस रिश्ते की बात कर रही हूँ, I was like बहुत अच्छा हमारा फ्रेंडशिप था, and people used to vouch, you know, they are like twins, always together and all kind of a thing. And then somewhere something, you know, came, and you know, I take responsibility that I started drifting. And then, like when in between, because that relationship is very close to my heart, you know, मैंने बहुत प्यार किया है उस रिश्ते को, उसको मैंने बहुत चाहा है? तो कहीं ना कहीं वो प्यार अभी भी है, वो, और वो चीज ना तंग करती है कि यार इतना प्यार किया है मैंने इसको, आई रियली मिस टॉकिंग टू दैट पर्सन, आई रियली मिस बीइंग विद दैट पर्सन, बट समथिंग इज होल्डिंग बैक। वो ना फर्स्ट स्टेप लेने का मन नहीं करता है कि मैं ही क्यों करूं, यू नो, मैं ही, उसको ये लगेगा मैं नहीं रह पा रही हूँ, यू नो, होता है ना ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में। ये तो And, बिल्कुल होता है ना। मेरे को हाँ, ये लगता है कि ना, जैसे ना वी समटाइम्स आर ईगो कम इन बिटवीन, हम एरोगेंट हो जाते हैं। एंड व्हाई मी फर्स्ट, हर बार मैं क्यों भागूं, व्हाई शुड आई रन आफ्टर हिम और हर, मुझे क्या पड़ी है, आई एम हैप्पी, yeah, आई एम आल्सो हैप्पी विदाउट हिम, एज yeah, ही और शी इज yeah, आल्सो हैप्पी विदाउट मी। that तो is क्या ही true. फर्क पड़ता है। बट कहीं Yeah, ना कहीं ना दिल में को लगता है यार कुछ कमी है, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ डिजायर तो है कि काश वो बंदा फिर से मिल जाए। absolutely. So that is what it was. And you know, I was just thinking about it. And मतलब हमारा, okay, we both are busy in our lives, तो हमारा ना अभी वो WhatsApp messages भी नहीं होते ज्यादा. And suddenly I get a message from that friend of mine. And मैंने पढ़ा और मुझे खुशी भी हुई, और कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि वो अभी भी वो चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पीछे से वो भी आया, देखा, अब डाला ना मैसेज। I'm talking about myself. I'm not talking about anybody else. But this is how we are.
And these relationships matter to us. They do matter to us. But we only bring it down with us. हम उसको धीरे धीरे अपने साथ नीचे ले जाते हैं. अपने साथ क्यों बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी नीचे जा रहे हैं. It's not only the relationship. It is taking us and our life also down. That is what this chapter is talking about. That this particular area of our life, relationships, is so damn important. कि हमें पता भी नहीं है ये किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, and is taking us down or up depending on the kind of relationships we have. Yeah, I mean, I became a little emotional. Yeah, please go ahead. No matter what your temperament is, No matter gratitude, yeah, no matter what your temperament is now. yes, no matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. Okay, pause. Now, when we start practicing gratitude for our relationships, now I'm just reading this chapter with you, and it is changing me from inside, right? As a human being, I'm able to see the connection I have with that relationship. I'm able to see where am I going wrong in my relationship? Where am I taking my relationship? आपको नहीं लगता ये आपका improvement of you as a human being is a one step towards that? It's giving me understanding. It's giving me patience. और हर एक इंसान में हम क्या कहते हैं, यार उसमें तो ना समझ ही नहीं है, वो तो समझता ही नहीं है मुझे. Why can't people be more compassionate? Why can't they understand कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? We are just judging people. But when you start practicing gratitude, you start understanding people. You become more compassionate. You become more kind to people. आप दूसरे के नजरिए से जिंदगी देखना शुरू कर सकते हो. अभी तो हम अपनी जगह खड़े होके देख रहे हैं ना. Then we can start looking at, I don't even know what that person is going through in life. Why can't I be kind to that person? Why can't I have patience for that person to come on, on her own, or connect with me on her own? Maybe she's dealing with something right now, which I'm not aware of, because वो connection ही तोड़ दिया मैंने, कि वो मुझसे हर बात कर पाए. So when you start thinking like this, you are on the right, कहते हैं ना, right road और right रास्ते पे चल रहे हो, जहां से आप improve होते जाओगे as a human being, as a person. And that is what gratitude does. Makes you a more understanding, patient, and a kind person. And you won't even realize it. ये अपने आप होता चला जाता है. People start saying कि कितने पेशेंस से आप सुनते हो लोगों को, कितना प्यार है, आप सबसे कितना प्यार करते हो. You don't even realize that becomes you. That is who you become, because that is who you are. भूल गए हैं. But gratitude brings that back to our essence, to our foundation, जहां जैसा हमको ईश्वर ने बना के भेजा है. तो हम उस तरह के इंसान बनना शुरू हो जाते हैं when we start doing gratitude for each and every relationship. हाँ जी, पढ़े. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Yeah. So when you start looking at the good things, when you start looking at, कहते हैं ना, हर एक इंसान में there is a gold in every human being. You just have to dig it. और dig करने के लिए क्या करना पड़ता है?
जब भी हम माइनिंग करते हैं क्या करते हैं, डिग करते हैं ना, डीपर जाते हैं। जितना डीपर 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 जाएंगे उतना डीपर जाने पे ही सोना मिलता है। ऊपर तो मिट्टी विट्टी सब आने वाली है ना। तो वही हमारे रिलेशनशिप पे होता है। अगर हमें उस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना है, we want our relationship to flourish, we'll have to remove all that dirt, all that ऊपर का परतें जो हमने जमा रखी हैं उसके ऊपर, to dig deeper to find gold in that person। अब वो गोल्ड हर एक के अंदर छुपा है। आपके हर रिश्ते में, ये जो 3 रिश्ते आपने चूज किए हैं, उन रिश्तों में आपने वो ढूंढना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। कंप्लेनिंग बहुत कर लिया, क्रिटिसाइजिंग बहुत कर लिया, जजिंग बहुत कर लिया, है ना। सो लेट्स टुडे लुक एट गुड थिंग्स अबाउट दोज पीपल एंड यू विल फाइंड दैट किस तरह से आपको सिर्फ उनमें अच्छाइयां ही नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जितनी चीजों के लिए आप कंप्लेन करते थे ना, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आपकी अटेंशन उनकी अच्छाइयों पे है, तो जो आपको उनकी कमियां दिखती थी वो दिखनी ही बंद हो जाएंगी। जिसके लिए हर टाइम चिक चिक होती थी, वो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम। यू आर फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स, यू आर फोकसिंग ऑन द गोल्ड इन दैट पर्सन। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897-1975, writer and playwright. ओके, तो अभी जब आपने काउंट द ब्लेसिंग्स 2 दिन लिखा है अभी सिर्फ, है ना। तो अभी ये जब आपने काउंट द ब्लेसिंग्स लिखा, were you feeling joyful or happy before writing them, or once you started practicing gratitude for those 10 things, you felt more happy, joyful, and lighter? Tell me. When I was writing those 10 blessings, now I was getting present to that how blessed my life is. Yeah. So those are the When I treasures. have experience of being blessed, तो डेफिनेटली ना एक कोई जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत पीसफुल होता है, बहुत जॉयफुल होता है। और तब स्ट्रेस नहीं होता, तब मैं शुक्राने में होता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम ओके विद व्हाट आई एम, वेयर आई एम, हाउ आई एम। Yeah. So that is what I said. When you said, na, you feel blessed, that is the treasure you have, no? जब जिस जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, those are your life's treasures, but we just ignore them. But that's what it says, कि जब आप इन सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हो, उस टाइम you feel that experience of being alive. You feel happy, you feel light, you feel like child. जैसे होता है ना बच्चे खुश, हर टाइम मस्ती में, और हर टाइम energetic. You start feeling like that when you start counting your blessings, when you actually are conscious of your treasures. When you're counting your blessing is what? You're being conscious of your treasures, right? Yeah, please continue. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. Yeah, this is very important. Yes, Very, very, very important. If you remember this, you will, be you will be very thoughtful and very choosy with your words कि आप क्या बोल रहे हो। जो भी आप बोल रहे हो, आप किसी और को बोल रहे हो, but you are attracting that back into your life, because law of attraction is working at every moment, whether you know it or don't know it। वो तो काम कर ही रहा है। जो आप दूसरों के लिए बोल रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। You are attracting that back into your life, so you're harming your life. So choose your words very carefully whenever you're speaking about others. Yeah, please continue. I'm actually, I have also experienced this. Yeah. Recently only, like, at home, I had little bit argument with my sister-in-law, and we were like, a lot of argument. And then
When I went to office, same thing happened at the office place also with my colleagues. So the पूरा environment change हो गया, पूरा दिन खराब हो गया ऐसे. So it was, I've experienced this, like, but then when I think while I'm reading this chapter, I think how important they are in my life, and you know, if they wouldn't have been there, I wouldn't have been focusing on other things, or if I wouldn't have been able to write my own book, or I wouldn't have been able to take care of my mom when she was there, if they wouldn't have been there to take care of my family. So Yeah, when I related that so much with this incident. It's yeah. it really impacts your life. And it's not a coincidence that we are reading this and all these relationships are popping up because they are important to us. Yes. They are important to us. But we forget how much they are contributing in our life. We only start focusing on what is not working, what is what is not as per our expectations. क्योंकि लाइफ में रिश्तों में खटास या रिश्तों में अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं, they are just because of our own expectations. We want things to be in a certain way, and in reality when they are not like that, that is what brings stress, that is what brings that disconnect between two people because of expectations, है ना? But when we start focusing on how much they are contributing in our life, how important are they in our life, then you're focusing on the gold, you're focusing on gold within them. तो ये ऊपर की चीजें नजर ही नहीं आती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी उसने बोला, वर्ड्स, जो भी हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं, वी फॉरगेट कि साइकिल हम शुरू कर रहे हैं, घूम के मेरे पास ही आना है. You remember the first day or the second day I had asked you guys to do the assignment कि अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ भी अच्छा या कुछ भी जो भी experience हो, I really want you to start looking at it. When and how did you start that cycle? आपने ऐसा क्या किया, है ना? So if we start practicing that every single day, कि हम जो बोल रहे हैं, अगर मैंने किसी के साथ ऐसा किया है तो मेरे पास घूम के आना ही है. और अगर किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया है, तो you don't have to blame that person. You have to start looking at मैंने कब किसको ऐसा बोला. Like Almas is saying that she said something or she had some argument at home and she got it back at work in some form or the other. It comes back to you. So whenever you're saying something to another person, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए अगर कुछ बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि जो बोलोगे वो आपके लिए भी सच होगा. Yes. वो आपके लिए भी सच होगा. अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हो, तो वो आपके लिए भी सच होगा, वो घूम के आपके पास भी आएगा. So you are not harming that person. You are ultimately harming your own self. So choose your words very carefully, even when you're doing argument with somebody. अगर आपका किसी के साथ argument हो भी जाता है, which is very normal. We all are human beings. जब हमारी बात कोई हमारे तरीके से नहीं हो रही होती है, तो हम अपनी बात को किसी भी तरीके से कहते हैं. But now onwards, be very careful कि आप क्या बोल रहे हो. Choose your words very carefully. Yeah, Anji. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? Yeah, that is what we want all the time. We want people to accept us the way we are because we don't want to change. हमें तो कोई कमी है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं. भगवान ने जैसा बनाया मैं तो ऐसा ही हूँ. अगर कोई बोलता है कुछ तो हम कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ.
मैं तो ऐसी ही हूँ, टेक इट और लीव इट बोलते हैं ना हम, हाँ. चाहे गुस्से में ही बोलते हैं तो. बट what happens when it comes to others? Why can't we accept them the way they are and love them? Yeah. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Okay. So if she's talking about today's practice, so अभी जो हमने 3 लोगों के pictures हमने select किए हैं, so let's see what to do about them. Yeah. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Okay. So you had to choose 3 people from your life who are important to you. आप चाहो तो अभी भी अपने वो 3 पिक्चर्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहो, किसी और इंसान की पिक्चर लेना चाहो, you can do that because we are yet to start the assignment. तो आपने 3 लोगों को चूज करना है अपनी लाइफ में से. They could be your parents, your wife, your son, your daughter, your in-laws, your friends, your boyfriend, your girlfriend, your colleagues, your boss, your business partner. कोई भी हो सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. क्या सो आपने ऐसे 3 लोगों की फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करना है. तो फोटोग्राफ कैन ईदर बी ऑफ देयर ओन और इट कुड बी विद यू. तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहें इन द पीपल यू हैव चोजन, यू कैन डू इट and you can choose somebody else also, no problems. But it has to be somebody from your immediate life which is important to you, right? So 3 people, 3 pictures. Yeah. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. Okay. So you have to think about the good times or good things about that person. Yeah. तो आपने एक जो भी एक पिक्चर लेनी है उसके बारे में सोचना है पहले कि इस for this person what are the 10 things I can be grateful for. It could be the qualities, the traits of that person, or it could be the outer, जैसे होता है ना पर्सनालिटी के कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं. जैसे मान लो किसी की स्माइल अच्छी लगती है, किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, किसी का वे ऑफ कम्युनिकेशन पसंद है, किसी की आवाज पसंद है, and it could be anything. Or maybe there was a time, आप लोगों ने बहुत मस्ती की हो, कहीं पर इकट्ठे घूमने गए हो, या किसी कॉन्सर्ट में गए हो और बहुत एंजॉय किया हो, या कहीं डिनर पे गए हो, कुछ भी, एनीथिंग which brings smile on your face about that person. आपने ऐसे उनके बारे में ऐसी चीजें को याद करना है. It could be something, when you were going through a very bad time. Maybe you had a breakup with your girlfriend or a boyfriend, and your brother or your sister came up and sat with you and said, listen to you, and just heard you out and just said, "Okay, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा."
And at that time, that was so soothing. It was like a balm on your soul. And you just remember that कि उस time कितना अच्छा था ना, मेरी बात कितने अच्छे से सुनती थी और सुनता था. So just think about that particular moment. Just think about 10 good things about that person जो आपको अच्छी लगी थी या अच्छी लगती है उनके बारे में. हाँ जी. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you're grateful for. ओके, तो करना क्या है, पहले आपने उस इंसान के बारे में सोचना है. Like for example, if you have to think about your sister, I'm just taking an example, and you're just thinking about your sister. Okay, इसमें क्या क्या अच्छा है, यार इसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, मेरी सिस्टर की स्माइल बहुत अच्छी है. So this is one point. The other thing is, she always supported me. जब मम्मी पापा मुझे कुछ बोलते थे तो सामने खड़ी हो जाती थी. So that is another thing. Number 3, we had so much time ना, इतना जब बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे, कितना मजा आता था. So you thought about that. So like that, you have to think about 5 good things about that person. कुछ टाइम अच्छा बिताया होगा, या कुछ उसने आपके लिए किया होगा, या उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी, यू नो या उसको देखो कितने अच्छे से मम्मी पापा को ये समझा देती है बात, जो मेरे को कहना होता है मैं तो गुस्से में बोलता हूँ, और ये कितने प्यार से मम्मी को वही बात इतने अच्छे से मनवा लेती है. सो मे बी द कन्विंसिंग पावर. तो पता नहीं उसके बारे में आपको 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको याद करनी है उस टाइम पे. जस्ट थिंक अबाउट 5 गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. And after recalling that, पहले सोचना है. ओके, बिकॉज सीधा लिखने मत लग जाना, बिकॉज लिखने लगोगे तो हो सकता है कुछ दिमाग में आए कुछ ना आए, एंड यू विल बी जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग क्या लिखूं, अच्छा चल यही लिख देता हूँ. नो, फर्स्ट थिंक अबाउट इट. think about 5 good things about that person, and then look at the photograph of that person. उसके पिक्चर को देखना है आपने, और उसके बारे में 5 अच्छी बातें या 5 good things you are grateful for. You have to write it on your notebook, right? और लिखना कैसा है, थैंक यू. पहले उस थैंक यू लिखना, फिर उसका नाम लिखना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, योर सिस्टर्स नेम इज स्मृति, थैंक यू स्मृति, एंड उसके बाद फॉर व्हाट, राइट? सो उसके लिए उन्होंने टेम्पलेट भी दिया नीचे, सो यू कैन जस्ट सी हाउ टू राइट इट. या प्लीज कंटिन्यू. Thank you, their name, and for what. या. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. When you have finished your list of all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magical word thank you and the person's name. ओके, तो आपने थैंक यू के बाद उसका नाम लिखना है, एंड किस लिए थैंक यू है वो लिखना है आपने. थैंक यू, देयर नेम, एंड फॉर व्हाट. ओके, एंड देन आपने उसको उस फोटोग्राफ को अपने साथ रखना है. अगर मोबाइल पे है तो वो साथ में ही रहेगी, और आपको दिन में उसमें दो या 3 बार देख के उसको मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के बोलना है थैंक यू, और उसका नाम लेना है. ओके, या. Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships,
the faster every relationship in your life will miraculously change. Okay, so आपने पढ़ लिया कि कैसे करना है, आपने पहले उसके बारे में सोचना है, फिर उसकी पिक्चर को देख के आपने 5 उनके बारे में अच्छी चीजें लिखनी है और कैसे लिखनी है, थैंक यू और उसका नाम और फॉर व्हाट, क्या? तो दिस इज हाउ यू सपोज्ड टू डू इट एंड यू सपोज्ड टू कैरी दैट पिक्चर विद यू एंड 3 times during the day, whenever you get time, just have a, see their picture and smile and say thank you and their name. This is what is the assignment. Now, you can do this for all 3 people. I mean, you're just doing it for 3 people today, but if you want, you can continue doing this every single day. आप अपने सारे रिश्तों पे इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं. जैसे आपने 3 लोग आज चुने, आप कुछ 3 लोग कल चुन सकते हो, फिर 3 लोग परसों चुन सकते हो. इस तरह से करके आप अपने सारे रिश्तों को ग्रेटिट्यूड से भर सकते हो. दैट इज वन वे. द अदर थिंग इज, अगर कोई एक रिश्ता है जिसको आप बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस gratitude for that particular relationship for, like, say for 1 week or 10 days. आप continuously concentrated gratitude उस relationship के लिए भी कर सकते हैं. So these are the ways you can improve your relationships. Yeah. Okay, let's look at the practice. Magic practice number 3. Magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Okay, so this one we have started practicing already, so we know how to do it. In case anybody has any concern or any question about this, you can write it on the WhatsApp group, or you can just DM me separately and I can speak to you and explain it to you. Yeah. 2. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. 3. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Okay, so we have already chosen 3 people. If you have not chosen yet, please, after reading this chapter, now you have more clarity कि आपको कौन से रिश्ते चुनने हैं. तो आप अपने 3 ऐसे रिश्ते चुन लीजिए और उनकी फोटोग्राफ को निकाल लीजिए. And what are you supposed to do is, you're supposed to first think about the good things about those people, then look at their picture and write 5 things you are grateful for each person. आप अपनी नोटबुक में जिसमें आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आफ्टर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स you have to do this assignment today. Yeah. Begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magical words thank you and their name, thank you, Haley. Yeah. So after doing this practice, after writing those 5 things about them, each one of them, you're supposed to carry their picture with you. And at least at 3 occasions, you have to just look at their picture. आपने दिन में 3 बार at least कभी-कभी बीच में उनके पिक्चर को देख के और उस बात को याद करते हुए कि आपने उनके बारे में क्या लिखा है, वो आप ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से पॉप अप हो ही जाएगा जब आप करोगे. तो मोमेंट यू लुक एट देयर पिक्चर, यू विल से थैंक यू एंड देयर नेम्स. तो जैसे मान लो उन्होंने थैंक यू हेली लिखा है, तो मान लो आपने अपनी सिस्टर के लिए लिखा है, तो आप थैंक यू और उसका नाम, राइट? सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. ओके. 6. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so this is another practice which we started yesterday and which we need to continue doing till the end of this book is the magic rock practice. तो अगर आपको magic rock नहीं मिला है तो please आज magic rock जरूर ढूंढ लीजिएगा. It's a very important and very powerful practice
एंड आपको पता भी नहीं चलेगा जिंदगी कैसे बदलती चली जाएगी एक छोटी सी प्रैक्टिस से, राइट? So after doing this gratitude practice for those 3 people, the last thing before going to bed, before going to sleep, not bed, sleep, सोने से पहले आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है और वो आपको पता है कैसे करनी है। आपने उस रॉक को, जो भी आपकी मैजिक रॉक है, उसको अपने हाथ में रखना है और उसके हाथ को हाथ में रख के ऐसे मुट्ठी बंद करनी है एंड यू हैव टू स्कैन योर डे। पूरे दिन को आपने स्कैन करना है कि मेरे साथ आज क्या क्या अच्छा हुआ, या एंड उसमें से जो सबसे अच्छा लगा उसके लिए, बिकॉज जब आप उसको याद करोगे तो यू आर एक्चुअली रीलिविंग दैट मोमेंट, राइट? एंड यू विल बी फीलिंग that joy, that happiness which you felt at that moment. And then at that moment, say the magical words, thank you for that particular incident or what jo bhi us time pe hua tha, and then just put it by the bedside and go to sleep. So this is your magic rock practice which you need to continue doing every single day. Okay, so this is about today's chapter. बहुत powerful chapter है, हो सके तो दोबारा वीडियो देख लेना एक बार, अगर हो सके तो बुक में से पढ़ लेना, जो भी हो पर एक बार कर लेना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल चैप्टर। अपने रिश्तों को मैजिक से भरने के लिए ये बहुत अच्छा एक चैप्टर है जो हमें सिखाता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे मधुर बना सकते हैं, कैसे अपने रिश्तों को और प्यार से भर सकते हैं, कैसे अपने रिश्तों को और अंडरस्टैंडिंग से भर सकते हैं। और हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग हो, है ना? तो वो अंडरस्टैंडिंग बनानी कैसे है वो हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो हो सके अगर एक बार में नहीं समझ आए, प्लीज वॉच इट अगेन, एंड जरूरी नहीं आज ही दोबारा देखना है। जब भी आपको लगे कि आपके रिश्तों में कहीं कहीं कुछ खटास आ रही है, या आप you're not feeling happy about some relationship on that particular day, just watch this video once again. Okay, it will definitely help you. It always does. Yeah, watch my words. Thank you so much. Have a wonderful day and a very, very, very wonderful week. And I will speak to you tomorrow. And Prayer. yeah, yeah, Prayer. we'll do the prayer. Thank you so much. Thank you for reminding me. Anybody wants to say anything before we do the prayer about today's chapter? No. Okay, great. Okay, fold your hands, close your eyes and say, आज because हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो आप चाहो तो किसी भी एक रिश्ते के लिए gratitude दे सकते हो। Thank you guys, and thank you so much for being in this session, and I really appreciate each one of you for being so committed for your life. And thank you, Almas, for reading today's chapter. Thank you so much. Bye-bye. Bye.